What do you mean by to get into hot water? हेलो दोस्तों, नमस्कार. इसका मतलब होता है to get into some trouble. To get into some trouble. Sentence क्या हो सकता है? If you don't listen to your seniors, you might get into hot water. Thank you. लिव इन अ फूल्स पैराडाइज इसका मतलब क्या होता है? किसी भ्रम में रहना, किसी भी भ्रम में रहना. इफ यू डोंट वर्क हार्ड, दैट मीन्स यू आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज. थैंक यू. थ्रो कोल्ड वाटर. टू थ्रो कोल्ड वाटर मीन्स किसी को डिमोटिवेट करना, किसी को डिस्करेज करना. सो दैट इज टू थ्रो कोल्ड वाटर. ही ट्राइड टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान्स. To pass the buck. To pass the buck means to blame each other. Political parties are seen passing the buck on to each other on trivial issues or some big issues. Thank you, everyone.